सो द थिंग इज़ जो यहाँ पे हम चीज़ लिखेंगे सो वो हम लैपटॉप पे भी चेक करेंगे इज़ दैट ट्रू और नॉट। ओके, बिकॉज जो मैं चीज़ कर रहा हूँ राइट नाउ आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू दैट हाउ यू कैन मेक इट, हाउ आई एम मेकिंग जस्ट दैट। ओके, so the thing is straightforward, just started. So the thing is it's all about, so दोनों चीज़ों को लेके you just need to make a very small investment and it will start compounding and after that you will find out the result. Okay, simple as that. So if you अगर जैसे basically I'm from India, so हम सब कहीं ना कहीं से आए हैं. So if you are just coming from your home country, okay ये home नहीं है but it just it's earth, कहीं से भी आए हो आप, so you come as an international student, right? So you start struggling, आप struggle करना शुरू किया and आपको कोई भी just for somehow you अपने थोड़ा थोड़ा settle करना शुरू किया and you start saving $5 every single day. Okay, so there are 28 days in a month. अगर 7 14 21 और 28. ओके, आफ्टर दैट सो इसको आप कर लो, यू कुड हैव $140 at end of every month. So start investing that one. Start investing. Okay, never invest where you are as an internet student जब तक आपको एक you are not in a secure place. Start investing at in your home country. Okay, क्योंकि if somehow भगवान ना करे if you need to go back you have something in your pocket कि आप खाली हाथ नहीं जाओगे. ओके, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे मैं सोचता हूँ. इट्स नॉट कि वी विल बी ऑन द सेम पेज, सब अलग अलग हो सकते हैं. सो जस्ट लाइक दैट. सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर होम कंट्री. ओके, सो वी कुड जस्ट कैलकुलेट. सो यू गॉट $140 एवरी सिंगल मंथ एंड यूज उसको हम विच इज़ द एक्चुअल करेंसी रेट and which is 55 right now the day I am making this video. So it would be near about 7,700 rupees. So this is convertible amount. So start investing this amount in any mutual fund. Okay, जब आप यहाँ पे आए हो so you should definitely 18 के हो गए हो आप, so you can easily open an MF which is mutual fund and the minimum to average what they provide you is 25%, either 30%, depends ki what kind of stocks you choose, or it's not about stock, it's about what kind of fund you choose to invest in. So this is the percentage amount they are going to provide. So now how you can make 1 CR, 1 crore रुपया as an internet student if you are not coming और कि बस आप PR हो जाओगे. So it take time. So how could you make 1 CR during this period? So the thing is start investing this money 7,700 for approximately in consistent way for 14 years, right? So definitely average person जो यहाँ पे आता है it should be 22 की एज में. सो इफ़ यू प्लस 14 ईयर्स और उसमें ऐड कर दें, सो इट वुड बी 36. सो एट द एज ऑफ 36 यू विल हैव 1 CR इन योर बैंक अकाउंट. आई एम नॉट जस्ट लिख दिया ऐसा नहीं, आई विल शो यू वट आई हैव अर्न इन लास्ट 1 year at this formula what I have written down over here. So hey guys, ये कुछ इंटरफेस है what from where I'm starting. What does compound interest actually mean? So here something is, so if we are investing 7,700 every single month, so this is the monthly investment, not any lump sum, this is just monthly investment. क्योंकि सबकी पेमेंट्स की वीकली आती हैं, फोर्टनाइटली और मंथली, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही चलता है. सो व्हाट द एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट, सो एज आई हैव रिटन डाउन कि 25 से 30 एंड एवरेज, but what I have in my portfolio right now it's 33, so I'm just writing 25 जो भी हमने least लिखा था, so that one. So now here where the things changed. So if you invest this thing for 1 year, so I have written down जो हमने पहले लिखा था कि 90,000 के अराउंड बनना चाहिए. So for
33%, बट जो मैंने लिखा था यार मैं चेंज कर देता हूँ, 33%, it should be 1,10,000. Okay, so what I have in my portfolio is something different, bit more, maybe वो कुछ पॉइंट्स का फ़र्क हो सकता है. So अभी यहाँ पे 25 ही लिख देते हैं. So as you keep इसको साल को टाइम पीरियड को बढ़ाते जाओगे, सो यू कुड फाइंड आउट अ लॉट चेंजेस ओवर हियर, लाइक 7,700 हर महीने एक साल के लिए. सो आपकी जो बेसिक अमाउंट होगी वो 92,400, उस पर आपको 13,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा. सो दैट्स फॉर 1 ईयर. सो इफ़ यू डू इट फॉर 2 years you could find out 56,000. If you go for 3 years you could find out more than double, 1,38,000. If you do it for 4 years you could find out 2,38,000. If you go so on. So what I have written down कि आप जैसे मैं 22 के you came here and आप 14 साल हम लगा लेते हैं, राइट, एवरेज. So how you can make 1 CR and कितना टाइम लगेगा उसको, just write down 1 and 4. So after 14 years if you don't want to continue you need to take everything out. So invested amount should be 12,93,000 and what you have in your bank at that time. Okay, so it should be 1,16,75,000 and the interest you can earn on that one is 1 CR. So आपकी एक कॉफ़ी for the $5 can make you a crorepati in 14 years. Because here the thing is it's just a $5, क्योंकि जो एक और 55 का फ़र्क है, this whole things make much easier for a international student to have something as a backup. जिनके पास नहीं है, जिनके पास है उनके लिए तो ये भी कम है. So that's what is SIP. अगर आप कहीं पे भी just like ये स्टॉक में मैंने वैसे ही खोला हुआ है. So that's just to show you. Okay, now just wanna show मैं कुछ चीज़ें blank रख रहा हूँ for safety, but just showing you my MF mutual fund where I am investing right now from past 1 year and what I have, and so far अगर मैंने इसको continue किया then definitely I will take something out from this one. Okay, this goes here. So just show you that what I have invested, okay, right now from last 1 year and what return I am getting right now, and yep, that's all. I don't want to hide something from you. It's just bit of my bank branch and both XYZ. But yeah, हाँ मेरे बहुत SIP cancels हुई हैं and it's just like this is what portfolio is. So I definitely suggest you start investing. सिर्फ अपने बैंक अकाउंट में नहीं, put somewhere where you get a very good return, और वो एक और 55 का जो फ़र्क है you could make best out of it, and that's all, and thank you so much.